हेलो दोस्तों। अभी आज का दिन है 20 नवंबर, डे फ्राइडे एंड अभी टाइम हो रहा है 11:20 p.m. जस्ट फ्यू मिनट्स ago I thought I should prepare one smart video on data science. Just I want to tell you about little bit about the data science. Nowadays, data science is a very growing career in not in India only, across the globe. Everybody want to become a data scientist nowadays. Yeah, if anybody want to come in the data science field, that doesn't matter. That person is from the engineering background, medical, commerce, anything. कोई मैटर नहीं करता है कि उसने बीटेक किया है या बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है या मैकेनिकल में किया है, XYZ कुछ में के BSc किए हो, BA किया हो, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक हो, डॉक्टर हो, XYZ एनीथिंग person can come into in this domain data science and start working on it. So the first thing is that market में बहुत सारे terms होते हैं data science profile में. Some people are working as a data scientist, data analyst, business analyst, subject matter expert, machine learning engineer, AI engineer, some analytics profile and all these things. But most of times work is same. अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इनका जो मोस्ट ऑफ टाइम वर्क, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इनका जो कंज्यूम होता है वो होता है एनालाइजिंग द डेटा, गेटिंग द इंसाइट फ्रॉम द डेटा, एंड समटाइम्स दे आल्सो वर्क ऑन द मॉडलिंग पार्ट वेयर वी टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, regression, supervised and unsupervised learning. So all these things. But डेटा एनालिस्ट वही काम करते हैं कि इनसाइड राइट द प्रोग्राम लॉजिक, understanding the business requirement, stakeholder requirement, to understand what they want and how you will solve the problem. Suppose I am working in Rapido, so I have some XYZ stakeholder and they came with some problem कि we have seen this, I came across this problem XYZ and we build this hypothesis. ठीक है, सपोज डिमांड कहीं कम है, रैपिडो इज ए 2 व्हीलर बाइक शेयरिंग कंपनी, तो सपोज कहीं पे डिमांड कम है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो पहले हमने वो हाइपोथेसिस बनाई, फिर उस हाइपोथेसिस को अलग अलग वैलिडेट किया कि ये रीजन जो हमने बनाया है, रीजन कुछ स्टेक होल्डर बताते हैं, कुछ हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से लेके आते हैं क्यों कि डेटा क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, उस हिसाब से हम कुछ अपने हाइपोथेसिस लगाते हैं. फिर हम और स्टेक होल्डर मीटिंग करके एक कंक्लूड बनाते हैं कि यार दीज आर द फाइनल हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस के बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं. हम क्यों काम करना स्टार्ट करते हैं कि फिर एक अगर सपोज कर लो डिमांड लेस है तो उसकी 5 to 6 हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं, टू हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं, 10 हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं. तो फिर हम एक हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए. सपोज मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, नॉट रैपिडो. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ द डोमिनोज. Suppose you are an analytics consultant and your stakeholder, your client is a Domino's Pizza. So you went to Domino's, said to me, this is a particular store where our sales is not happening. So there can be multiple reasons. So first, what consultant person will do? Consultant person make the hypothesis. So he will do some market research to collect some data to understand the data what is going on. Suppose he make the hypothesis, might be location is not correct, might be employee behavior is not good, might be cuisines is not good, might be pizza stuff is not good, quality is not good, interior is not good, employee behavior is not good, price is cost. So we will come across the multiple hypotheses, then we will validate by the existing data one by one hypothesis. ऐसे करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या थी
सेल्स नहीं हो रही, तब हमने हाइपोथेसिस बनाई और एक एक हाइपोथेसिस को वैलिडेट किया कि कौन सा रीजन कौन सा रीजन कितना इफेक्टिव है, कौन सा रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स डाउन होने पे और सेल्स इंक्रीज होने में। तो ये सब चीज़ें हैं। सो या एंड नाउ डेज मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम what language we should learn. So I would suggest so there is a multiple language, R, Python, so many languages. People is I have started analytics from the SPSS Excel during my MBA first year. I started from the XPSS, then I switched into the Excel, then then Python. So like that. So but there is a multiple thing. So for the programming there is a two language, R and Python, but I would suggest to if anybody want to start career in the analytics, I would suggest person should start from the Python, not R, because both are the open source, but the problem with the R is आप मतलब इतनी लाइब्रेरीज इतने पैकेजेस नहीं अवेलेबल हैं जितने पाइथन में. इवन इफ़ यू विल गो फॉर द AI आल्सो लेटर, इफ़ यू विल do for the test mining and all these things, Python will be much easier compared to the R. और मैंने आपको बताया, मैंने SPSS से स्टार्ट किया, फिर R यूज़ किया, वेका यूज़ किया, ऑरेंज यूज़ किया, R यूज़, फिर पाइथन. बट the most thing I love is Python. I don't want to switch into another language. Python is very easy. Yeah. So this will be the programming language, and one programming language you have to learn for the database. So there is a two type of database. One is RDMS, RDBMS database, and second is not RDBMS dataset. So RDBMS is like a SQL. So you should know at least SQL. SQL is very important language. You should learn the SQL. If you can learn the NoSQL like as a MongoDB, that will be well and good for you. And some people said Tableau, ClickView, ClickSense, and so many Power BI and so many tools are there for the data visualization. But there is also open source. Whatever I told you, that is a paid data visualization software. But nowadays many startup and many good companies are using the free source open source data visualization tool like Metabase and many more tools. So overall मैं अगर बोलूँ which skills do you require to work on the analytics domain, you should know the R or Python, but I would prefer go with the Python. And you should know, you must be know the SQL. SQL is a base. If you don't know the SQL, then you cannot work on the analytics. It's mandatory. SQL आना ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. You should be good with the SQL, then you can take R and Python anything. I would suggest Python. Then little bit stats, basic statistic आनी चाहिए. मतलब हाइपोथेसिस क्या होती है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, लाइन चार्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, बार चार्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, पाई ग्राफ कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीज़ें. मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए. प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया. लॉजिकल थिंकिंग एंड बिजनेस अप्रोच होनी चाहिए. मतलब आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आई ना, तो आप उसे सॉल्व कैसे करते हो, ये बहुत ज़रूरी है ना. बट ये भी आप जब धीरे धीरे जाओगे ना, जब आप जॉब करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बिजनेस प्रॉब्लम है, हम इसे ऐसे ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ये बाय एक्सपीरियंस यू विल लर्न मोर हाउ टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम. And just at last I would tell you, in data science there is a three type of data. One is a structured data, second is a semi structured data, and third is a unstructured data. So जैसे हम एक्सेल यूज़ करते हैं ना, हाँ वन स्किल एक्सेल यू शुड नो वेरी वेल. पिवट कैसे लगाते हैं, कॉलम कैसे लगाते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी बेसिक. एक्सेल इज़ मैंडेटरी. सो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि टेबल फॉर्मेट में जो भी हमारा एक्सेल में डेटा होता है ना, जिसमें रो एंड कॉलम होती है, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर डेटा. सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जेसन और एक्सएमएल फाइल होता है. जेसन देयर इज वन डेटा टाइप. सो उसमें
मतलब JSON and XML इज ए सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि जैसे हमारे पास शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड्स हैं, एनी लैंग्वेज वर्ड्स हैं, पीडीएफ है, इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, एनीथिंग, ठीक है। वो सब हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाता है, ठीक है। बस आज बहुत हो गया, ऑलरेडी 10 मिनट्स के ऊपर हो चुका है। आई थॉट आई विल मेक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, बट इट्स फाइन, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो फॉर ऑन डेटा साइंस। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कितनी जल्दी लेके आता हूँ। कुछ अच्छा सा टॉपिक सर्च करता हूँ, नॉट सर्च, कुछ अच्छा सा टॉपिक सोचता हूँ डेटा साइंस के ऊपर, लेके आता हूँ कुछ। तब हम्म, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, सब बखैर, बाय बाय।